ভাবে গ্রিসে প্রবেশ করাটা কেমন হবে আমি বলবো আপনার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত আপনি এখানে লিগ্যাল ভাবে আসবেন আপনার একটা মেয়াদ দেওয়া হইব 6 মাস কিংবা 1 বছর ওইখানে আপনি লিগ্যাল ভাবে থাকতে পারবেন এখানে হয়তো আপনার রেসিডেন্ট কার্ডটা এত তাড়াতাড়ি হবে না والناس خم تخرج وعائلتك موافقين انك تخرج؟ موافقين نخرج يعني نخرج ما دام ما لقيت انت ما هتلقى يا صاحبي اقسم بالله تلقى عند الجنجو بس يا مان كان بدفع تجدير زي ده জীবনে যদি ঝুঁকিটা নিতে না পারো তাহলে জীবনে কিচ্ছু হবে না, সাইন করতে পারবে না, টাকা পয়সার মালিক হইতে পারবে না, জীবন কাটাইতে হবে খয়রাতের মতো। 1 ইঞ্চি জায়গা কেউ ছেড়ে দেয় না। এখানে নিজের পায়ের তলা মাটি নিজেকেই শক্ত করতে হবে নয়, লক্ষ্য পূরণ করার স্বপ্ন হওয়া উচিত। লাখ লাখ মানুষের ভিড়ের মধ্যে مش مهم سنك المهم نبني Λοιπόν, είδατε φαντάζομαι τα γραφικά. Μιλάμε για υπερπαραγωγή που ανεβαίνει στο TikTok. Όλη αυτή η δουλειά που κάνουν οι διακινητές είναι πραγματική υπερπαραγωγή. Δείχνει, βλέπετε εδώ, ακόμα και τη διαδρομή. Πώς δηλαδή από το Σουδάν, γιατί ουσιαστικά δείχνει την διαδρομή από το Σουδάν μέχρι τα παράλια της Λιβύης, την περιοχή του Τομπρούκ και μετά πώς με ταχύπλο δείχνει εδώ, προφανώς δεν είναι πάντοτε με ταχύπλο, τους φέρνει στην Κρήτη. Λοιπόν, βιομηχανία πολλών εκατομμυρίων, την οποία, ας είμαστε απολύτως ειλικρινείς, την ελέγχει ο στρατάρχης Χαφτάρ. Τίποτε δεν γίνεται στην Ανατολική Λιβύη εάν δεν περάσει από την έγκριση του Χαφτάρ